हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम बात करते हैं आईएएम के पार्ट 2 वीडियो सेक्शन में। यहाँ पे हम बात करते हैं आईएएम। देखिए लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन सीखा था, कंसोल पे लॉगिन और सीएलआई पे लॉगिन। इस वीडियो में हम एक फ्रेश यूज़र बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक फ्रेश यूज़र बनाया है, वी कुमार। ओके, एंड इसके अंदर मैंने एक पॉलिसी अटैच की है, एडमिन एक्सेस। ओके, एंड इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल अभी नहीं है, ठीक है, ना ही कोई एमएफए है। तो ये अकाउंट हमने एज ब्राउज़र पे लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो भी काम करेंगे अब हम इस यूज़र के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब एक्सेस करते हैं IAM। ओके, IAM में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूज़र ग्रुप। ओके, यहाँ पे हम बनाते हैं एक ग्रुप। ग्रुप में क्या, ग्रुप इज़ द कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया प्रॉड। ओके, यहाँ पे अब देखिए ये पूछ रहा है कि कौन से यूज़र इसमें अटैच करना है। जैसे मानो मैंने अटैच कर लिया, मैंने अभी कोई यूज़र अटैच नहीं किया, ठीक है, बट परमिशंस। ओके, परमिशंस कौन सी मुझे मुझे देनी है। परमिशंस मैंने फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया RDS फुल एक्सेस। ओके, ये RDS फुल एक्सेस। ओके, एक ये बन गया एक ग्रुप। ओके, अभी देखिए इसमें कोई भी यूज़र नहीं है, बट आप इस ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ पे एक परमिशंस है जो कि है Amazon RDS फुल एक्सेस। ओके, अब ये काम कैसे करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं एक यूज़र बनाता हूँ, क्रिएट यूज़र। यहाँ मैं बनाता हूँ विजय 123, आई मीन विजय और मे बी वी कुमार 1। ओके, एंड हियर यहाँ पे मैं इनको उसको देता हूँ सेम IAM यूज़र कस्टम पासवर्ड, आई विल यूज़ सेम पासवर्ड। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कैंसिल और यहाँ पे इसको नेक्स्ट। और यहाँ पे अब मैं इसको इस ग्रुप में डाल देता हूँ, प्रॉड वाले ग्रुप में, जहाँ जिसको भी Amazon RDS का फुल एक्सेस है। ओके, लेट्स सी कि ये यूज़र कैसे काम करता है। ओके, लेट्स मी क्रिएट दिस यूज़र। I can create this user. Okay, this user is successfully created. Let me copy this and let me open a incognito window and let's see how this user is behaving now. Okay, he should have only RDS access. He should not have any other access. Okay, my username was Vijay Kumar 1, correct. Let me go Vijay Kumar 1. Password is same. Okay, let me log in. See, when this user logged in, if I will click on EC2, okay, then see what's happened. Okay, you can see API error. This user is unable to access anything, you can see. But if I will use RDS service, okay, you can see it doesn't have any error. So this user can access RDS without any issue. Okay, so if we want to give access to EC2 also, then go back to the previous. Okay, just cancel this. Now we don't have to assign any policy to this user. You can see this policy is coming from the group. Okay, we don't have to assign policy from here. We just have to go to group, then in prod, in policy, attach policy. Here we can mention EC2 full access. Okay, attach policy. In prod, now we have two policy. Okay, let's go here and now refresh this page. Okay, you can see this page is now successfully working without any error. Now this user is having
EC2 console access as well. Okay, so what about this role? Okay, so role, so policy is for user. I mean, user is using by the human. Okay, so we are using user. Okay, maybe, but roles we have to attach on a AWS resources. Okay, for example, if I will go and create role, you can see allow AWS services like EC2, Lambda, and other. Okay, so this have five. You can see AWS account, web identity, federation, and customer trust policy. But here we will see this in the next lecture. So previous now we can focus on this groups. Okay, so how many groups we can attach in a particular user? Okay, so let me see. So I think the by default user is 10. Okay, so you can assign IAM user up to 10 groups. Okay, so in one user we can assign 10 groups. Okay, that is the maximum limitation. Okay, so here let me go to the IAM once again. So now I'm in IAM console. I can go to user. So this is our user V Kumar by which we have logged in. Okay, so let's go to security credential. Okay, and here we can click on assign MFA device. Okay, just type the name V Kumar authenticator app and then next. Okay, just click on the show our QR code, and I am just opening my Google Authenticator app. Okay, I have opened my Google Authenticator app, then I am scanning the QR code. Okay, I scanned. Now let me type 596041. 596 Okay, so let me wait for next code. Okay, 4340, then 36 and double it, add MFA. Okay, so you can see we have successfully assigned the MFA for us. You can see this one. Now let me log out this user. Okay, so now let's log in back to this user. Go to the root account and click on this dashboard, click this URL, minimize, and then paste here. Okay, so see, this is our details which is already filled it. So okay, so now it is asking MFA also. This is a two-factor authentication. So let me see my phone. What is the code I have? This is 590304. Okay, so this is logged in. Okay, so now let me tell you one more thing which is a very important. So suppose this user, okay, this user is having only this two access. So let's try to assign uh, MFA for this user. Okay, first let me see where this user logged in. Okay, so here this user logged in. Okay, so let's go to IAM. So see, this user doesn't have any IAM user access. Okay, so suppose if this user want to assign the MFA. Okay, so what we can do, first, the first option is we can assign MFA by us. Okay, we can ask, we can give the screenshot to capture the QR code and we can ask the MFA. Or what we can do, or
we can just go to the permissions, okay, and add permissions, and then policy, and you will see some MFA. You see IAM, is the policy MFA. Mhm. I Okay, okay, I'm not able to find this policy, but I will tell you how we can assign those policy to the user. Okay, so this video is where I'm ending because this video is getting too long. So I'm trying to minimize the timing of the video so that you will not bore. Okay, so I mean, let's capture in the next slide.